हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अगेन। एंड ये हमारा वीडियो नंबर 3 होगा रिगार्डिंग प्रॉम्प्ट स्पीचेस। तो प्रॉम्प्ट स्पीचेस अगर आपको नहीं पता है तो इसमें एक रैंडम वर्ड आपको दिया जाता है और यू हैव टू स्पीक अबाउट इट एट लीस्ट 1-2 मिनट डिपेंडिंग ऑन द कंपटीशन। तो इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि यू हैव द एबिलिटी टू स्पीक स्पॉन्टेनियसली, है ना। जनरली क्या होता है कि आपको एक टॉपिक दिया जाता है, आप उसके बारे में पढ़ते हो, आपकी खुद की कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है और उसके बेसिस पे आप बोलते हो। बट प्रॉम्प्ट स्पीचेस में क्या होता है, यू विल बी गिवन अ सेंटेंस एंड यू हैव टू स्पीक स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, तो ये आज वीडियो 3 होगा। ठीक है, तो ये रहा वर्ड, मीन्स ये तो पहले से सिलेक्टेड था, तो हम एक दूसरा वर्ड सिलेक्ट करेंगे, दैट इज एब्सर्डिटी। देखो एब्सर्डिटी का मतलब मुझे थोड़ा थोड़ा पता है, तो इसको अवॉइड करते हैं। जब मतलब नहीं पता है तो इट्स नॉट टू स्पीक, है ना। एवोकाडो। सो हैव यू हर्ड अबाउट एवोकाडो, what it is used for, and you know what kind of soil is required to grow the avocado. So when I was having typhoid, I was given an advice to eat fruits like avocado, and that day I searched about it. So I have heard of it कि avocado क्या होता है, but I was not exactly aware exactly what it is. Then I get to understand, then I get to know that this is not Indian fruit. This came from some other countries and there are variety of it. One avocado which is, I think, is either from USA. It's very costly. Like one avocado cost around 100 and more than 100 rupees. So this is the information about avocado, and it helps in a lot of diseases. And you might have seen a lot of videos onto YouTube reels ki how to open the avocado, because it is little complicated to remove the shell and get the pulp which you eat. Okay, but it is like you know, रॉयल बोलते हैं ना, रॉयल। सो दिस फ्रूट कम्स अंडर रॉयल कैटेगरी। इन फ्रूट्स इट्स रॉयल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वर्ड। देखो यही होता है, यू माइट हैव सीन दैट आई वॉज लाइक हेजिटेटिंग समथिंग। लेकिन ये होता है, अगर आपको कोई ऐसा वर्ड पता है, एवोकाडो के बारे में मुझे कितना ही पता था, ठीक है, बट मैंने बोला क्योंकि मतलब पता है तो बोलना है, कुछ भी बोलना है, ऐसा रुकना नहीं है। अगर आप रुक गए तो फिर भाई काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, डिपार्टमेंट। सो you might have heard departments in your school, colleges and companies. The question is why this department is required. ऐसा क्यों नहीं होता कि सब कुछ एक डिपार्टमेंट के अंडर ही कर लें। उसका रीज़न ये है कि we humans are good in various things, but we have to be best into one thing because the knowledge is infinite, है ना। इंसानियत की सभ्यता 10,000 सालों से है, एंड इन दैट होल टाइम वी हैव स्टडीड अलॉट। इतनी चीज़ें पढ़ने के लिए हैं दैट यू कैन नॉट स्टडी एवरीथिंग। सो जैसे बोलते हैं ना, राइट टूल फॉर द राइट जॉब। जैसे अगर मुझे स्क्रू ओपन करना है तो मुझे ऐसा कोई टूल चाहिए, स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा उसको ओपन करने के लिए। आई कैन नॉट यूज अदर टूल, इट मे हेल्प बट दिस वुड नॉट बी द राइट थिंग। ठीक है, similarly there are several departments in our school, in our college, so that they will give certain kind of training in a particular direction, so you can make your career into that field and you can learn information into that field and do excel into the life. So various departments are very important, and one thing I would like to add as well, that in your daily work you will have a lot of work. So try to categorize, make a department kind of thing, like this is critical department, this is grooming department, this is exercise department. So
These are various department and categories, and based on that I will classify my work and do my work accordingly. Okay, that was the second word. Now coming to the final word, that is since. SE, अच्छा ये नाउन मैंने सिलेक्ट कर दिया था गलती से, मैं यहाँ कर रहा हूँ एनी, ठीक है. फूलिश वॉज सिलेक्टेड रैंडमली, तो अब लास्ट विस्कोसिटी. ओके, सो विस्कोसिटी, देयर आर टू एस्पेक्ट अबाउट विस्कोसिटी. द फर्स्ट इज that we have studies in our school and colleges. So viscosity is a kind of friction that works between two layers of liquids. जैसे अगर आप देखोगे तो अगर if you flow grease into one pipe versus water into pipe, you might observe that, you will observe that water flow very easily into the pipe. The reason is that the friction between the layer of water versus the friction between the layer of grease is very different. Means grease have a lot of friction, a lot of viscosity into it. That's why it has less tendency to flow. And in our real life, viscosity is a kind of restrictions that we have. Okay? So it's all about restrictions. Like you can use viscosity in a way that when you are having a lot of task in your mind, then we have a kind of viscosity to start some new task, है ना, taking decision into new task. We have some kind of inertia as well as viscosity when we are trying to take some big decisions. There are viscosity between the people, we have frictions, and the best part in your life is how you handle these frictions, because people are asset and these are the best asset that you can utilize. So reduce that viscosity between you and people and you will feel that life is really better. So that was it from my side. If you want, you can rate me onto the comments, and if you want my reviews onto your prompt speeches, you are welcome. You can send your videos onto my Instagram. I will add my Instagram link onto the description box, and if you want to know about me, you can go to the about section. So that was it. Thank you my friend for watching this video up to this end. If you have any doubt, please comment onto the comment box. Thank you. Have a good day.